ओके सो आज हम जो है वो बेसिकली वापस जाएंगे लेक्चर नंबर 1 पे जो इस कोर्स का था। इसमें हमने बात शुरू की थी प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन का जो ताल्लुक है उसकी, ठीक है। देन वी लेफ्ट इट देयर एंड स्टार्टेड बिल्डिंग द मैथमेटिकल मशीनरी फॉर डीलिंग विद मिक्स्ड स्टेट्स एंड देयर एवोल्यूशन। दैट्स व्हाट बेसिकली वी हैव बीन डूइंग। तो डेंसिटी ऑपरेटर और जो ऑपरेटर सम फॉर्मलिज्म है उसको हम जो है वो डील करते रहे हैं। और फॉर्चुनेटली एंड पे हमने लास्ट वीक में ये भी देख लिया है कि जो कंटिन्यूअस टाइम डायनामिक्स है वो हम कैसे ओपन क्वांटम सिस्टम की फार्मुलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो अब जो दो तीन लेक्चर रह गए हैं उसमें वी विल ट्राई to again answer the question that we started off in initially. What's the relationship between the probability and information? Or essentially, what we will do in a couple of lectures, कि जो शैनन के आइडियाज थे क्लासिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी के, उनमें से जो बेसिक चीजें हैं we'll review them and introduce the quantitative definition of information, or which is also called entropy. Or then I will also introduce similar concept in quantum mechanics. और फिर उसके बाद what I will try to do is see if we can do a couple of examples where we relate quantum information theory and thermodynamics. Because आप सब लोगों ने ज़ाहिर thermodynamics का basic course पढ़ा हुआ है, you saw कि entropy जो है through second law of thermodynamics, it's essentially a fundamental part of statistical and thermodynamics physics. So चूंकि we'll relate entropy with information, so it means information, entropy, and thermodynamics are all related. And we'll try to see a couple of examples, mostly classically, but then also quantum mechanically. Unfortunately, हम ज़ाहिर इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकेंगे, but just to give you hint, जो आप कह लें कि quantum statistical mechanics है, what I can say, rigorous quantum statistical mechanics, the real quantum statistical mechanics, it's essentially based on density matrix formalism. आप लोगों ने अगर बेसिक कोर्स लिया हुआ है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे यूजिंग सम काउंटिंग आर्गुमेंट्स और कुछ जो क्लासिकल हमारी विजुअलाइजेशन और टूल्स हैं उनकी मदद से you try to answer some questions about properties of, let's say, collection of particles के energies क्या हैं, state transition और probability distribution या state different state distribution etc, entropy. तो वहां पे लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और जो टूल था वो काउंटिंग की थी. You count things here and there. But really speaking, the rigorous quantum treatment of statistical system comes through density operator formalism. क्योंकि density operator क्या है? It's a way of writing mixture of quantum states. तो जो अगर आपके पास एक classical particles की collection है, तो essentially your state is a mixture of possible quantum states that those particles can be in, right? So that's a rigorous way of dealing with a collection of particle quantum mechanically. So I'll have a few hints, for that, but hopefully we'll leave it at a place that if you take the advanced statistical mechanics course, that course can start from right there. तो जो आइडिया है अब आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स का वो यही है कि try to give you a few definitions and concepts without going into too much mathematics. कि जो एंट्रोपी है उसका क्लासिकल और जो क्वांटम डोमेन है उसमें क्या रोल है और उसको कैसे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. So let's begin with the Shannon's idea of quantifying information, and then we can take it to quantum physics, which essentially
was generalized by von Neumann. So von Neumann is somebody who's mainly credited with the transforming the ideas of information from classical to quantum. Okay, so let's begin with the Shannon. So what Shannon postulated was this, that if you have, let's say, some source, let me call it X, which is generating some states. For example, अगर ये कोई transmitter है, it might be, sending pulses either, let's say, this or that. So maybe this is for one, this is zero, or other pulses. There might be, more than one type, more than two types of pulses, or some character, or something is coming out of this source. So there are some symbols or some states that are coming out of this source. So he was trying to quantify the information that is contained in something which is coming out. Actually, उसका जो purpose था वो twofold था. एक तो ये कि he was thinking that let's say if I have some memory and I want to store these states as they come out right here, and then at a later time I retrieve it. So what's the minimum bits on the memory disk that I need to have to store a given information? So this is called his noiseless coding theorem. Okay, noiseless इसलिए कि as soon as you have data, you want to store it. You don't consider the impact of noise coming from here to here. And then his second question that he was trying to answer, that what are the limits or how many bits per symbol I need to send on the average, so that in the presence of noise, कि यहाँ से जो data transmit हो रहा है वो receiver side पे I can decode. कि जब ये bits यहाँ पे information receive हो, so I can faithfully decode the information. So, and that theorem is called the noisy coding theorem. So it's one is noiseless and one is noisy. So for both of these theorem, the fundamental thing that he introduced was the quantitative measure of information. And let me first give his postulate, and then I'll try to justify it according to Shannon. So according to him, if there is some source X, which can also be considered, random variable, which is, let's say, sending out some symbol Xi's with probabilities Pi's, then the information can be quantified like this. Or you can, write it like this as well. Pi log 1 over Pi. So the motivation for him was this, that, if something is less likely to occur, it means that when that thing occurs, we get, higher amount of information. Okay. And so that's why he postulated that my information should be proportional to the inverse of the probability. And that's why this negative sign with this Pi is essentially to make sure that the information is inversely proportional to the logarithm of the probability. And then his, second thing was this, that if something is not likely to occur, that its probability is zero, I should have zero information. My information shouldn't depend on this. That's why you see, a multiplicative Pi here as well. For example, if Pi is zero, this sort of goes to, infinity. It becomes very large. But this Pi brings it down to zero. And then he also wanted to, have a smooth function of Pi. So there can be many choices. Log is only one of them. You can have, more than one ways of having a function which is smooth function of probabilities.
And then another major requirement that he imposed, that just sort of imposed this logarithmic function, was this: that if I have, let's say, two independent events, let's say P and Q, then the information coming from here and here, they should add up. And that's why there is this logarithmic function, because if there's uh, probability, you want to write the probability of something occurring this and this, then this probability is proportional to the product, and then log of the product is log P plus log Q. So based on these things, he motivated this definition. And I think another motivation could have been that this looks eerily similar to the entropy that was already postulated by Boltzmann about more than 50 years before Shannon. Shannon was working on these ideas in 1940s, towards the end of Second World War, whereas this type of function was already in use in physics, to quantify something which was called entropy by Boltzmann. बस ये है कि statistical physics में you have a natural log. और यहाँ पे, by the way, whenever I write log, it means the log to the base 2. And that is usually the most common thing, because mostly we are working with the binary information, and then this makes it a bit easier to handle. Okay, so this was his definition for the information. And I'm not going to, do almost anything rigorously, because in a couple of, lectures, instead of proving a couple of theorems, I want to show you, some connection of these definitions with the physics. You can, prove, see appendix in, I think, Barnett, where there is a more sort of a higher, more rigorous explanation of why this can be related to information. But let me here try to make a connection through an example. Okay, ये जो entropy है, this has a direct interpretation as the number of bits that you need to, minimum number of bits that you need to transmit data from one side to the other side. And let me give you an example. For example, आपके पास जो है वो एक source है जो ये 4 symbols जो हैं वो transmit करना चाहता है या कर रहा है एक से दूसरी जगह. So, or suppose you only have access to, again, digital or binary information transmitter. So अगर आप एक naive, और by the way, let me give you the probabilities, और ये data इस तरह से ये generate कर रहा है कि ये जो symbols हैं, ये 1 जो है ये least likely to occur है, 2 जो है, sorry, this is most likely to occur, 1/2 है, जो 2 है it's little bit less likely, and 3 and 4 are the least likely to occur. और ये कोई atypical example नहीं है. Mostly जो data generate होता है उसमें जो different symbols या pieces of information होते हैं individual, usually they don't occur with the same probability. For example, अगर आप कोई text देखें तो आपको पता है कि सारे जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के वो सेम प्रोबेबिलिटी से नहीं आते, ठीक है. फॉर एग्जांपल ए जो है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, डी की काफी प्रोबेबिलिटी है, एल की, जी हाँ, या जैसे डब्ल्यू की कम है, ठीक है. वाई की, कीबोर्ड पे वो जो 4 लेटर आपकी उंगलियों के नीचे होते हैं वो दे आर वन ऑफ द 8 मोस्ट लाइकली सिंबल, दैट्स व्हाई दे आर देयर. तो इसी तरह जो जितने ज्यादा वो मुश्किल आपको थंब और यूं यूं करके जाना पड़ता है ना, उससे ज्यादा लेस लाइकली होते हैं. बट एनीवे, तो इस तरह जैसे क्यू है, यूजुअली इट्स फॉलोड बाय यू एंड ई एटसेट्रा. सो
normally in any information source, different symbols or different pieces of information have different probabilities. So let's say we have this source, and suppose we want to develop a binary coding that efficiently transmits information from here to here. One naive way is one code, could be, let's say 00 transmits 1, 01 transmits 2, 10 transmits 3, and 11 transmits 4. ठीक है, एक सिंपल सा कोड हो सकता है. अब यहाँ पे आपको पर सिंबल कितनी बिट्स भेजना पड़ रही है ऑन दी एवरेज? 2, राइट? आप देख सकते हैं कि ये हर सिंबल के लिए 2 2 है, तो you add them all up and divide by 4 and you have 2 bits. Another, possible coding scheme could be, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार बार आ रहा है, ठीक है, so why don't I just assign a single symbol to this thing? ये जब 0 आएगा इसका मतलब है 1 है, और ये जो 2 है ये इसकी फ्रीक्वेंसी इनसे ज्यादा है, इनसे कम है, so let me use 2 bits for this. So let's say I say 10 represents 2, and then I have 3 bits for this and this, so 110 suppose, or maybe 11. ठीक है. अब इसमें तो पहले तो हम देखते हैं कि ऑन द एवरेज अब सिंबल्स हमें कितनी भेजनी पड़ेंगी पर कितनी बिट्स भेजनी पड़ेंगी पर बिट. सो लेट्स कंप्यूट एवरेज बिट्स. सो जो हाफ प्रोबेबिलिटी है इसके साथ वी नीड टू सेंड 1 बिट. जो क्वार्टर प्रोबेबिलिटी है वी नीड टू सेंड 2 बिट्स, और इसके साथ वी नीड टू सेंड 3, और इसके साथ भी 3. ठीक है. जस्ट मैं यहाँ पे ये इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड नहीं कर सकता. वो मैंने इधर इसलिए कर लिया था कि ये सबके साथ 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 कॉमन हो जाना था, और इन सबका सम 1 होता है. तो यहाँ पे देखें, सो ये अगर आप कंप्यूट करें तो ये बनता है तक आई थिंक 7/4, 1.75 बिट्स पर सिंबल. सो 1.75 बिट्स पर सिंबल जो है, अगर आप ये कोडिंग स्कीम यूज करते हैं, यू कैन सेंड. अच्छा, ये अब मैंने चूंकि हिट एंड ट्रायल से कोड कंस्ट्रक्ट किया है, तो वन कैन से ओके, हो सकता है कि इसके अलावा और भी कोड हो जो इससे ज्यादा एफिशिएंट हो. ठीक है, इन जनरल विच इज पॉसिबल. ठीक है. और शैनन थ्योरम बाय द वे डजंट टेल यू कि हाउ टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट कोडिंग स्कीम. ठीक है, इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टिव थ्योरम, इट्स ओनली समथिंग दैट पुट्स अ लोअर बाउंड. तो लेट्स कंप्यूट द लोअर बाउंड, क्योंकि जो उसका नॉइज कोडिंग थ्योरम वही कहता है कि दिस इज the number of bits at the minimum that you require to transmit information. So let's say for this entropy compute करते हैं कितनी होगी, इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, माइनस pi log pi. तो pi log pi, pi log pi, pi log pi क्या. ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं, तो लॉग नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा. एंड इंटरेस्टिंगली इफ यू कंप्यूट इट, इट्स 1.75. So yeah, by accident, this was an example where we was able to get, guess the most efficient coding scheme right away. In general, you can guess different schemes and they will give you number of bits per symbol. It is always equal or more than this. Okay, equality जो है ना, it's a rare case, but in this case we were able to find it. So ये जो entropy है in classical information theory, is essentially the number of bits per symbol on the average that you need to encode your information if you want to send it over noiseless channel. Okay, there's no impact of noise here. That theorem is a little bit more complicated.
why something like information that's so fundamental कि हम बहुत सारे information की term में define करते हैं हमारे constructed pattern नहीं यहाँ पे तो लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है वन कितनी बार आएगा कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी इसका वन बाई टू प्रोबेबिलिटी है और फोर भी वन बाई एट है तो ये यानी ये तो ये नेचर में तो इस तरह रैंडमाइज होना चाहिए इसकी बराबर ही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए क्यों ये आपने कहा कि हम आपने नोट किया होगा कि हमारे जब हम कुछ मैसेज करते नहीं पहले तो अभी बोले कि क्यों सारे बराबर होने चाहिए अब देखें ना अब नेचर से मुराद अगर तो आप लेते हैं कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड यू नो मैनी बॉडी सिस्टम ठीक है देन यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर एग्जांपल आपके पास येलो बॉल्स हैं एंड यू हैव अ रूम फुल ऑफ येलो बॉल्स and you have distributed them uniformly randomly throughout and then if you know take a bucket of a given size आप कहीं से भी पिक करते हैं bucket को तो in general you will have the same number of balls wherever you pick ठीक है अगर तो नेचर से मुराद आपकी ऐसी नेचर है तो देन यू आर एब्सोल्युटली राइट लेकिन अगर नेचर से मुराद आपकी ऐसी नेचर भी है जिसमें हम सब लोग एग्जिस्ट करते हैं जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एटम्स की थोड़ी डेंसिटी ज्यादा है ये यहाँ पे कम है यहाँ पे कम है फिर मेरे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट में है सो अब देयर इज नो वे एंड दिस यू नो व्हाई शुड वी इमेजिन व्हेन वी सैंपल दिस थिंग randomly we should get the same thing as if we let's say getting by sampling from there ठीक है तो आप अगर नेचर को वो ले रहे हैं जो कि नेचर एट इन्फिनिट टाइम पे होगी व्हेन एवरीथिंग इज यू नो uniformly occupying the whole universe then it's okay but until then you know different sources will have different information वो उसका इससे ताल्लुक नहीं है वो हम क्लासिकल को क्वांटम की मदद से सेंड कर रहे थे दिस इज यू नो वी आर इन क्लासिकल एंड टोटली क्लासिकल ठीक है दैट इज समथिंग एल्स कि हम क्लासिकल बिट्स को क्वांटम बिट्स की मदद से भेज रहे हैं इट्स नॉट कवर्ड इन शैनन्स थ्योरम ओके ये बाइनरी सिस्टम का इसमें 0 और 1 स्टेट लेट्स से मेरे पास एक और होता है मैं कुछ भी सेंड करता था वो 1 की जगह मैं कुछ कोई इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करता यानी 3 स्टेट होती 0 1 और नो सिग्नल तो उस केस में ये 1.75 नो सिग्नल इज आल्सो स्टेट एंड अ सिंबल उसको हम एक अलग नाम नहीं आप उसको देना ही पड़ेगा मतलब क्या करेंगे आप यही करेंगे ना आप सिंबल भेज रहे हैं लेट्स से दिस इज योर 1 दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर नो सिंबल तो आप ये खाली जगह तो भेजनी पड़ेगी ना तो वो खाली जगह भी तो सिंबल ही है ना ठीक है ये वाली so the proof is you know Shannon's noiseless coding theorem I'm not proving it so I'm just telling you ठीक है नहीं आप जो मर्जी कर लें you if it is decodable then you won't be able to get below this अगर आप इसके नीचे आ जाएंगे तो you won't be able to decode it properly ठीक है मतलब आप ये भी तो कर सकते हैं एक बड़ा आसान कोडिंग ये हो सकती है another ठीक है ऐसे कि 1 जो है वो 0 से और 2 1 से होगा और जो 3 है लेट्स से वो भी 0 से और 4 जो है वो भी 1 से होगा इट्स नॉट अ बैड कोडिंग स्कीम ठीक है आप हो सकते हैं हाथ से पहले देख के क्यों क्योंकि दिस इज एफिशिएंट इन अ सेंस यू आर सेंडिंग ओनली 1 बिट पर सिंबल और लेकिन ये है कि अब आप एरानियस कर रहे हैं लेकिन एरर इतनी भी ज्यादा नहीं है व्हेन यू रिसीव 0 एंड यू इन्फर दैट यू आर गेटिंग 1 it's not it's still very likely that actually it was a 1 क्योंकि 50% of time it's 1 and it's only like less than about 12.5% time ही error बल्कि उससे उसका half जो है ना time error होगी ठीक है so you can construct coding schemes or sometime actually people do when they are restricted so they will they can then add redundancy in here you know somewhere sending
के बजाय 1 के you know you can send 1 1 etc. So ये आप इस तरह से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू नो, और सर मैं इसका प्रूफ भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. If we have time I might do it. That this indeed is the minimum number of bits per symbol that you need uh, to transmit and decode these symbols faithfully. कि आप उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सके. जैसे ये 0 1 वाला कोड आप यूज करते हैं, यू वोंट बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट फेथफुली 1 2 3 4. ठीक है ना. लेकिन अगर आप ये करते हैं, यू विल बी एबल टू डिकोड इट. एंड जस्ट वन लिटिल कमेंट, अगर आपके पास बाइनरी से ज्यादा कोई सिस्टम है, लेट्स से आपके पास जो सिंबल्स हैं वो 3 है, ठीक है, you can use 3 types of symbols, for example 0 1 2, to transmit different data. Then all you have to do is just change the base of the log from 2 to 3, and then you can get a similar definition. All right, so we now have a feel for what entropy quantifies. So it quantifies the information content on the average per symbol coming out of a source. Okay. जी जी, सेम चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, क्योंकि हमने देखे ना, रिलेट कर लिया ना उनको. एंट्रोपी तो उसके कहते हैं कि क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी के नाम से जानी पहचानी थी, ठीक है. बट व्हाट शैनन डिड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही रिलेटेड द एंट्रोपी टू द इंफॉर्मेशन. He saw that there is a connection which was not apparent to people before that. And he started applying the same thing to quantify information, for these, communication problems. Okay. So I will introduce the quantum analog of this entropy later on today. But before that, let me quickly review a couple of properties of this entropy, because then those properties would be helpful in understanding this entropy. So uske liye, let me consider, actually let me first introduce some mathematical concepts. कन्वेक्स फंक्शन. कन्वेक्स फंक्शन जो है ना, वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो इस तरह के होते हैं, ठीक है. तो लेट्स से कोई वेरिएबल x है, ये f ऑफ x है, तो जिनकी इस तरह की शेप होती है ना, उनको कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं. मोर रिगरसली स्पीकिंग, कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लें, लेट्स से दिस इज पॉइंट x1 and this is point x2, and you connect them by a straight line. Let's say this is some, so this is f of x, and let me say this straight line is some function g of x. Okay. So अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कोई भी आप जनरल पॉइंट x लें, तो कन्वेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू है f of x, it is less than or equal to g of x. Where g of x is the equation of a line connecting these 2 points x1 x2. That's the definition of a convex function. और जो कनकेव फंक्शन है वो इसका उलट है. जो इस तरह का फंक्शन होगा, ठीक है, उसको कनकेव कहेंगे, और उसमें जो ये है ये उलट हो जाएगा कि जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग है उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा हो. ठीक है. अब ये जो एंट्रोपी है ना, वी विल सी दैट इट्स अ कनकेव फंक्शन. ठीक है. सो चूंकि एंट्रोपी के साथ हमने काम करना है आगे क्वांटम मैकेनिक्स में भी, इट विल रिमेन अ कनकेव फंक्शन. सो लेट्स ट्राई टू गिव इट a more mathematical inequality form that will be useful for different properties. तो उसके लिए आप
अगर ये करें कि इस लाइन की इक्वेशन लिखें, लेट्स से, और अगर आपके पास ये दो पॉइंट है, ये x2 है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है ये होगा g ऑफ x2, ये x1 है तो ये होगा g ऑफ x1, और ये f ऑफ x1 के भी बराबर, ये f ऑफ x2 के बराबर है, और ये f of x2 के बराबर है. So let me write the equation of the straight line. So अगर आप y is equal to mx plus c वाले फॉर्मूले से लिखें, so actually we can write it like this. ये इसकी बजाय आई थिंक ये आसान रहेगा अगर मैं इसको इससे लिखूं. Let's say this is some y1 and this is some y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट इन जनरल y है. So y2 minus y over x2 minus x, ये स्लोप है लाइन की अगर आप यहां से कंप्यूट करते हैं, और अगर आप इन दो पॉइंट्स के में स्लोप कंप्यूट करते हैं तो दिस शुड बी y1 minus y x1 y minus y1 x minus x1. So this is the equation of straight line connecting two points y1 x1 y2 x2 where this point yx lies somewhere on the line. ठीक है, तो बेसिकली ये आप कर सकते हैं कि आप स्लोप कंप्यूट कर लें इस सेगमेंट की और इस सेगमेंट की, एंड द स्लोप शुड बी द सेम. दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो इसकी मदद से आई कैन यू नो write y minus y1 as, अच्छा इसको यूं भी लिख सकते हैं. आई थिंक दिस विल बी बेटर. अच्छा, आप सिर्फ इन दो सेगमेंट की स्लोप नहीं बल्कि एक दफा पूरे सेगमेंट की स्लोप जैसे ये है, ठीक है, और एक दफा एक पार्ट वाले सेगमेंट की स्लोप लिख लें जैसे दिस ओवर दिस है, दिस शुड आल्सो बी इक्वल. तो इससे जरा वो फॉर्म आ जाएगी जो मुझे चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 x2 x1, या ये आ जाएगा दिस इज सम g of x, this y1 is f of x1 f of x2 f of x1 f of x2 f of no, x2 minus x1 x minus x1, ये आ गया. और यहां से जो है वो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. f of x1, ये f of x1 इधर है किधर है, इसका कोफिशिएंट है माइनस x-x1 और x2-x1, इसको इधर कर लें, ये आ जाएगा x1 minus x x2 minus x1, और fx2 का कोफिशिएंट आ जाएगा x minus x1 x2 minus x1. ठीक है, जस्ट मैंने इसको ये f of x1 का ये 1, ये मैंने गलत लिख दिया, इसका 1 माइनस दिस ओवर दिस आना चाहिए था. तो आप एलसीएम लेके अगर इसको करें तो ये बन जाता है x2 minus x x2 minus x1, और ये बन जाता है x minus x1. हाँ, ये आ गया. अच्छा, अब आप जो ये वाला पॉइंट x है ना, इसको लिख लें एज सम lambda x1
प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, क्योंकि जब लैम्डा 0 होगा सो x इज x2, जब लैम्डा 1 होगा तो x इज इक्वल टू x1। सो जो पॉइंट है उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखी है, लैम्डा इज अ पॉजिटिव नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अब x की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो g ऑफ x जो है वो आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करें, ये कैंसिल चीजें करें तो यू विल सी कि इट कम्स लैम्डा एफ ऑफ x1 और 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2। और चूंकि जो कन्वेक्स फंक्शन है उसमें हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स से कम है, तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है, और एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू lambda x1 minus lambda. So mathematically speaking, this is the definition of a convex function. Lambda is a number between 0 and 1 such that x can be written in terms of x1 and x2. ये जो x है ना, इसको मैंने लिख दी है lambda x1 plus 1 minus lambda x2 है, सारे आ जाएंगे। lambda 0 से 1 तक है ना, तो 0 होगा तो x x2 है, 1 होगा तो x x1 है, मान वाले सारे आ जाएंगे। सो ये डेफिनेशन है कन्वेक्स की। और कनकेव के लिए lambda x1 plus 1 minus lambda x2 greater than equal to lambda f of x1 plus 1 minus lambda f of x2। या हम ये भी असल में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लेट्स कॉल lambda as p1 और जो 1 माइनस lambda है लेट्स कॉल इट p2। क्यों? क्योंकि अभी भी जो p1 प्लस p2 है इट शुड बी 1, राइट? क्योंकि p1 p2 दो probabilities and if they should add to 1, so this definition can be written as f of p1 x1 p2 x2 p1 f of x1 p2। और अगर आप कोई फंक्शन लें और उसको ऐसे डिफरेंट इंटरवल में डिवाइड कर लें, ठीक है, और हर एक में इसी तरह करते जाएं, तो यू कैन जनरलाइज इट टू एज एफ ऑफ एनी पी आई xi subject to the condition that all pi is at 1, then this is greater than pi f of x। So this is the definition or the implication of function being concave। So जो concave functions हैं they all fulfill this property। ठीक है जी? All right, so let's now see what does this concavity means। पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी एंट्रोपी की। Binary entropy is very common। So this means actually the entropy of a single variable, random variable x that only has two states। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल कॉइन है, हेड है या टेल है, सिंगल क्यूबिट है, यू नो we'll see later on that we can bring it, take it there as well। So इस तरह का जो वेरिएबल है कि when you measure it you either get one state or the other, तो उसकी जो एंट्रोपी है we call it binary entropy। कोई ऐसी यानी ये कोई और चीज नहीं है, ये वही एंट्रोपी है, बस ओनली आपके पास सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, सो एक प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी, एक स्टेट कर दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी। P1 P2 भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम 1 है, तो आपके पास बेसिकली एक ही जो है वो फ्री पैरामीटर है P। तो एच एक्स इस केस में क्या होगा, माइनस पी log P माइनस 1 माइनस पी log। बाय द वे इसको अगर आप प्लॉट करें ना एज अ फंक्शन ऑफ P, इसका प्लॉट यूं आता है,
So entropy is 0 if your P is 0 or P is 1. And entropy is maximum if P is half. You know, it's funny कि मैंने I think 2005 में I was introduced to the entropy communication theory का हमारा course था उसमें, and I still remember one thing from that, you know, introduction. और वो ये है from this binary entropy कि बेज़ाहिर जो है ना वो हम अगर नाइवली बात कर रहे हो तो हमें पता है कि यू नो लेट्स से एक वेरिएबल है तो उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उससे तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उतनी बढ़ती जाए, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ पी, इट्स कनकेव फंक्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट्स से कोई कॉइन है या कोई वेरिएबल है या कोई एक सिंगल बिट है, तो अगर उसके 0 या 1 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, देन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. उसकी वजह ये है कि अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो हमारे टीचर ने बताई कि अगर एक बंदा है वो हमेशा सच बोलता है, देन और उसने आपको इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही चीज के बारे में देनी है, इज देयर अ चॉक और नॉट. ठीक है, यू डोंट गेट एनीथिंग बाय लिसनिंग टू दैट पर्सन, यू नो. क्यों? क्योंकि उसने कहा चाक है, सो चाक है. ठीक है, और अगर एक बंदा हमेशा झूठ बोलता है वो भी उतना ही ट्रस्टेबल है जितना कि एक बंदा हमेशा सच बोलता है. हाँ, क्योंकि क्योंकि सिंगल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, तो अगर वो कहेगा चाक नहीं है तो आपको पता चाक है, क्योंकि उससे उसका अपोजिट कहना है. जो खतरनाक बंदा है वो उसमें वो है जो कभी सच और कभी झूठ बोलता है. ठीक है, तो क्योंकि आपको पता नहीं कि चाक है कि नहीं है, और जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप वाकया ही मेजर करें, फिर जाके आपको पता चलेगा कि, और जो आप यानी अब जाके वो मेजर करके चाक वहां पे देख के देखेंगे तो फिर आपको इंफॉर्मेशन जो मिलेगी दैट इज मच मोर देन अगर आपको एक सच्चा बंदा कहता है जी कि चाक है, आप जाके देखते हैं चाक है. ठीक है, you don't get anything by doing the measurement. Similarly, if there is 100% probability of something happening opposite. तो जो जो कनकेविटी है उसका एक जो बाइनरी एंट्रोपी की फॉर्म में मतलब है वो ये है कि the maximum information is when you your single variable is उसकी probability जो है वो half है. Okay, and let me give you another example that will probably eliminate concavity और इसका जो meaning है वो एक और सेंस में. फर्ज करें कि आपके पास दो कॉइन्स हैं. एक मैं वो चूंकि बुक से एग्जैक्ट कॉपी करूंगा, आप वहां से पढ़ भी लें, तो लेट्स यूज द वर्ड दैट ही इज यूजिंग कि एक ऑस्ट्रेलियन कॉइन है. ठीक है, और एक उसके पास यूएस कॉइन है. ठीक है, दो कॉइन है और लेकिन एट ए टाइम वो एक ही कॉइन फ्लिप करता है. ठीक है, जो भी सोर्स है, यानी ये अब वो डबल कॉइन वाली प्रॉबिलिटी की तरफ हम नहीं जा रहे जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास दो कॉइन है, लेट्स फ्लिप देम गेट हेड हेड और टेल. इस तरह नहीं हो रहा, बल्कि यू स्टिल हैव ओनली सिंगल रैंडम वेरिएबल के जो आपके इंफॉर्मेशन निकल रही है इट्स आइदर 0 और 1. ठीक है, आपको सिंगल इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो इट्स अ सिंगल इवेंट. लेकिन इवेंट इस तरह से अब है कि बजाय इसके कि somebody toss a single coin with some probability of head and tail, let's say they have two coins and sometimes they coin this toss, sometimes they toss this coin and sometimes they toss this coin. Okay, and suppose they uh, toss this coin with probability q and this coin with probability 1 minus q. अगर आप एक कॉइन टॉस करेंगे तो ये वो चूज होगा, ये वो चूज होगा. और सपोज कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉइन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो पी ए है, और जो यूएस कॉइन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो पी यू है. ठीक है, अब वो कॉइन टॉस करके तो जो रिजल्ट आता है आपको दे देते हैं. फर्ज करें वो कहते हैं हेड है या टेल है, और उस सिंगल
इंफॉर्मेशन से, सिंगल मेजरमेंट से इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो जो है वो आई कैन राइट इट लाइक दिस. So using concavity, ठीक है, यानी दो कॉइन्स हैं. एक जो कॉइन है वो लेट्स से उसकी हेड प्रोबेबिलिटी पी ए है, दूसरा जो कॉइन है उसकी लेट्स से हेड प्रोबेबिलिटी जो है वो पी यू है, और समटाइम दे पिक दिस कॉइन और दैट कॉइन. ठीक है, and you have some random variable, so this is now your random variable x, and the question is how much information do you get. और ये कंकेविटी हमें ये बता रही है कि द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट, क्योंकि ये क्यू भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इज एक्चुअली by this single, from the single variable, the information that you get is more than what you would get individually from either the US coin or the Australian coin. जी मैंने उल्टा लिखा, ओह सॉरी, मैंने, थैंक यू. और अब जो आपको सिंगल फ्लिप से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट्स एक्चुअली मोर देन इफ यू would be getting information from either this or that or even adding. और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों. फर्स्ट करें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना यूएस कॉइन की, वो 1/3 है, और जो ऑस्ट्रेलियन कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 5/6. अब देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटीज है सपोज, और अब आपको मैं कहता हूं कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपको मैंने ये नहीं बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलियन कॉइन पे किया या यूएस कॉइन पे किया, बट इट केम हेड्स. तो अब आपको असल में इंफॉर्मेशन जो है वो इट्स मोर देन द कॉइन टॉसिंग एज हेड मिल रही है. क्यों? क्योंकि आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि मैंने यूएस कॉइन टॉस किया था या ऑस्ट्रेलियन. मोस्ट लाइकली आई चोज एन ऑस्ट्रेलियन कॉइन. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉइन की प्रोबेबिलिटी देखें कितनी, हेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा और यूएस की कम है. इसका मतलब है जो सिंगल इवेंट से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इट्स मोर देन what is sort of the sum of these information. आपको जो कॉइन है उसकी आइडेंटिटी का भी पता चल रहा है फ्रॉम जस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ बीइंग हेड. x is the single variable, which is a single coin where the coin is chosen from a basket that contains two different coins. ठीक है, वेरिएबल अभी भी आपका बाइनरी वेरिएबल, यू आइदर गेट 0 और 1 और हेड और टेल. ठीक है, बट नो the random experiment is bit more complicated than just tossing a coin. ये जो है, this is just tossing a coin, this is just tossing a coin. ठीक है, but this is no more than that. Before tossing a coin, you actually toss another coin and then randomly pick one of these coins. So basically you do two experiments. आप पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर आपके पास हेड आता है या टेल आता है, और वो हेड टेल आ रहा है इस प्रोबेबिलिटी Q1 minus Q से, and then according to that choice you pick either Australian or US coin and then you toss, और जो उसका आंसर आता है वो आप दूसरे को बताते हैं. जो पहला आंसर है you don't tell it to anyone. ठीक है, but you choose a coin based on that. And this concavity essentially tells us that even if you don't tell us, this concavity says that the information that we are now getting is a bit more than what we would be getting from just the individual coins. जो concavity असल में we'll see that this plays role in many other things when we go on to proving properties of this entropy. अच्छा, अब मैं I'll have to actually say bit more about classical entropy in the next lecture. I'll try to relate it to statistical physics. लेकिन अभी जो है
I want to introduce the one Neumann entropy for quantum physics. So I'll try to take actually both of them together. क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, so I don't want to spend all the time on the classical. और जब हम इस पे पहुंचे तो टाइम ना हो, क्योंकि कोर्स है वो क्वांटम इंफॉर्मेशन का है. One Neumann entropy. So one Neumann generalized this definition of classical entropy to quantum physics, and he gave this definition, which has an unfortunate symbol S, which initially is confusing because S is for Shannon. लेकिन S जो है वो हम normally काफी लोग जो है वो quantum mechanical entropy के लिए use करते हैं बजाय S उधर और H इधर के. So this is the definition, which is very similar, as you can see, to the classical definition. Actually, he introduced in a this way so that it reduces to the classical definition when states are orthogonal. And we'll see it a bit later. So it says that अगर आपके पास कोई density matrix है जो किसी mixed state को represent कर रहा है, तो उसकी जो entropy है या उसके अंदर जो information content है, they're given by this. And again, there is a quantum analog to the classical Shannon's noiseless coding theorem, जिसमें Shannon ने ये prove किया था कि जो Shannon entropy है, it's essentially the minimum number of bits that you need to send one symbol on the average. और जो there's an analog theorem for quantum information that proves that this one Neumann entropy is number of qubits that you need on the average to send your state so that it's decodable. So it's not something just the generalization. It's actually extremely important thing in quantum communication, where you are trying to use qubits to communicate quantum information. Okay, so let's try to get some operational sense of this thing. Again, if we write our row, in spectral decomposition, अगर आप रो को आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज निकाल के इस तरह से लिख लें, इसको डायगोनलाइज कर लें, देन हमें पता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है एसेंशियली लॉग ऑफ दिस थिंग, और ये रो जो है चूंकि ये रो इस फॉर्म में है, सो दिस सॉरी ये प्लस ये, तो माइनस ट्रेस ऑफ रो एम वेक्टर्स, और जो लॉग है वो भी इसका आ जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा, तो इस रो एम के इसके साथ ये 1 हो जाएगा, और ट्रेस लेंगे तो इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये स्केलर्स हैं, और सॉरी देयर इज अ सम हियर, द सम m. सो शुरू में आप यहाँ पे सम n लिख लें, ठीक है, टू मेक इट डिफरेंट, बट देन सिंस दीज आर ऑर्थो नॉर्मल, सो इनर प्रोडक्ट उसी वक्त 0 होगा व्हेन m इज इक्वल टू n, सो दिस बिकम्स माइनस ट्रेस रो m लॉग रो m. Which mean कि अगर आपके पास कोई डेंसिटी मैट्रिक्स है, अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो यू कैन देन ट्राई टू इमेजिन दैट दिस फिजिकली इज रिप्रेजेंटिंग a statistical mixture of pure state rho m combined with the probabilities rho m to make this state. और फिर ज़ाहिर है अगर आप जैसे सिंबल के अगर स्टेट्स की बात करें कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स से कोई ओवन है, ठीक है, जो कि कोई पार्टिकल्स इसके अंदर उनको भेज दिया बाहर 1 by 1, और इट इज सेलेक्टिंग पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑफ दीज n orthogonal states with some probabilities, कभी ये कभी ये कभी ये, then this rho m is the probability of getting this state. और इस सूरत में देखें कि जो अगर आप वो शैनन की डेफिनेशन से भी आए, so since these rho m's are the probabilities of sending these states, the entropy should be
entropy should be given by this. So this nicely, has this interpretation. अब इसका अगर आपने कन्वर्स इमेजिन करना है तो दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी. यहाँ पे मैंने इमेजिन किया कि सारी ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं, इसलिए जब ये रो को आप स्पेक्ट्रल डिकम्पोज करते हैं तो ये सारी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं. ठीक है. अब अगर उल्टा आते हैं, दैट सपोज देयर इज अ सिस्टम which is sending some states with some probabilities, but in general if they are not orthogonal, then इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज है उनसे आप जो शैनन एंट्रोपी कंप्यूट, लेट्स से दिस इज सम सोर्स ए, कंप्यूट करेंगे. इट्स नॉट इक्वल टू the one Neumann entropy which will compute by first writing its density operator. उसकी वजह ये है कि जब आप इसका density operator लिखेंगे so you can start from this. Okay, there's no let's say it's sending out some probabilities pm, but इसका जो जब आप लॉग और ट्रेस लेना चाहते हैं यू हैव टू राइट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, और फिर उसको डायगोनलाइज करना है. और अगर ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है देन जो डायगोनल एंट्रीज हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस पीएम्स. और उस सूरत पे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, एंड एक्चुअली इट कैन बी प्रूव्ड व्हिच वी विल डू later on, that h of rho is actually h of a is higher than s of rho. ठीक है. So जो क्लासिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है it's being lost if we try to communicate it with non-orthogonal quantum states. क्यों? क्योंकि when we will get these states at our receiver, we won't be able to distinguish them. ठीक है. क्योंकि orthogonal नहीं है. हमने यहाँ पे कोई positive operator value measurement operators prepare किया हुआ है. It will not be able to distinguish all of these states from each other. So we are losing some information. So that's why this inequality. Okay. अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं क्विकली कि दिस इज अ क्वांटिटी विच इज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो रो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर ऑलवेज लेस देन 1, सो एवरीथिंग इज नेगेटिव. यहाँ पे ये नेगेटिव प्लस, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड जस्ट टू सी कि ये मैक्सिमम कब होगी, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल. और ये जीरो कब होगी? इट विल बी जीरो व्हेन यू हैव अ प्योर स्टेट. क्योंकि जब प्योर स्टेट होगी तो रो क्या होगी? ये होगी, यू हैव ओनली वन एंट्री, सो log 1 1 is 0. ठीक है. So in general we can say that S of rho satisfy this inequality. जी ये वाली I'll prove it later. ठीक है. तो लेकिन यहाँ से आपने ये तो देखा कि इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि अगर ये when you're starting out and this is not orthonormal, you will not be able to diagonalize it in this basis. So किसी और basis में करेंगे तो in general these probabilities will be different from the numbers that you get on the diagonal. तो जो entropy, जो one Neumann entropy है, we compute it from the numbers that come on the diagonal after diagonalizing row. ठीक है. और जो classical entropy है, this will simply compute from the probabilities with which we prepare different states. Okay. और ये इसलिए ज्यादा इसलिए कम है अगर states non orthogonal है, we will not be able to distinguish them when we receive them. Okay. Now the last thing that I want to do is prove that
one Neumann entropy is concave, or then by extension, we will be able to prove in general that Shannon's entropy is also concave, because Shannon's entropy is just a special case of one Neumann entropy when you start with orthogonal states. Okay. So suppose I have a density matrix, which is the superposition of two density matrices. So it means my entropy S of rho is proof of concavity. तो जो ये रो है इसकी एंट्रोपी क्या होगी, रो m log रो m, और जो रो m है ये कहां से आ रहा है, रो m आ रहा है, you choose an you know an orthonormal basis, and let me label that basis as rho m, and then you take your density operator and you find its expectation values for different states, which are the eigenstates or the normal eigenstates of this operator rho. So let me put this rho m here. So S of rho is m, और इस रो की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूँ p1 रो 1 p2 रो 2 रो m log रो m p1 रो 1 रो 2 रो m. So this can be written as minus m pm rho m rho 1 log p1 rho m rho 1 p2 rho 2 this minus m p2. बेसिकली मैंने जो पहली टर्म है वो अलग कर दिया, जबकि लॉ के अंदर तो आई कैन डू इट, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज. ओके, अब ये देखें, ये लॉ के अंदर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं. पॉजिटिव नंबर क्यों है कि जो हमारे डेंसिटी ऑपरेटर्स हैं, वी नो दैट दे आर पॉजिटिव ऑपरेटर्स. अब किसी भी स्टेट पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले, डजंट मैटर कि वो स्टेट उनके अगेंस्ट स्टेट है या नहीं है, कुछ भी है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स. तो इसका मतलब है कि इस ये नंबर बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसी तरह ये जो नंबर है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है. तो अब अगर मैं लॉगरिथम के अंदर इन दोनों की बजाय सिर्फ एक टर्म ये वाली रख लूं, ठीक है, तो उसका जो लॉग होगा वो इस पूरे से कम होगा. ठीक है ना, ओके, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है. और इसी तरह अगर इस लॉग के अंदर मैं इन दोनों की बजाय सिर्फ ये टर्म रख लूं तो उसका लॉग ज्यादा होगा. सो आई कैन remove one term, which means that this S of rho will not, and then I will have smaller quantities because of the negative sign. E1
इसको जो है ना, let me write it some row m1 plus let's call it some row m2 and by the same logic I think we can remove this p1 and p2 क्योंकि this is some number और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है तो this would be smaller than just log of row 1 ठीक है so I can remove this one as well तो अब ये जो है this is just s of row 1 और जो ये है this is just s of row 2 अगर मैं ये वापस लिख लूं तो जो वन न्यूमैन एंट्रोपी है इट्स जी के जो इनका वो प्रोडक्ट है क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है तो इसको बल्कि यूं देख लेते हैं हाँ मैं log p1 row m1 is log p1 plus log row m1 और ये p1 जो है दिस इज अ नंबर स्मॉलर देन 1 so ये नेगेटिव नंबर है so it mean all of this is going to be greater than or equal to log row m1 so this essentially becomes even smaller okay so we have proved concavity of one Neumann entropy and by extension that is also a proof for the Shannon entropy as well because Shannon entropy is just a special case of one Neumann entropy when you prepare your system using only orthogonal states so whatever is true uh, for Shannon entropy for one Neumann entropy can be uh, is true for Shannon entropy if rho is prepared using orthonormal states. So ये भी concave है, वो भी concave है, and this concavity we will use it for establishing some properties, though not all, in the next couple of lectures. Just some. इसलिए कम हो गई कि एक मिक्स फॉर्म में भी तो स्पीड काफी ज्यादा हो गई हाँ, but essentially this is saying that whole is more than its individual parts. हाँ. Okay, so let's stop here.